In this video, we will discuss about sequencing. So, sequencing is very important topic in operation research. So, sequencing. So, sequencing we use in various applications. So, basically, we define the sequencing as the selection of an order in which the service rating customers is called sequencing. Basically, we define this sequencing as sequencing problems. Sequencing problem is the problem of finding an optimal sequence of completely certain number of jobs number of jobs so as to minimize the total elapsed time, the total elapsed time between completion of first and last job. First and last job. Okay, so we have some terminology or some basic definitions. So we also remember the basic terminology. That means number of machines. Number of machines. So how many machines we use for performing any task. So basically जैसे हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमारी दो मशीन काम कर रही है. एक मशीन हमारी सपोज करो प्रिंटिंग कर रही है. सो आफ्टर प्रिंटिंग वी गो फॉर द बाइंडिंग. दूसरी मशीन ये है वो बाइंडिंग कर रही है. सो ये नंबर ऑफ मशीन्स हो गई कि दो टास्क दे दिया कि फर्स्ट मशीन आपकी प्रिंटिंग करेगी. जो प्रिंटिंग हो जाएगी देन वी मूव टू द सेकंड मशीन फॉर द बाइंडिंग. ओके, सो द नंबर ऑफ मशीन्स. सो वी राइट डाउन द डेफिनेशन. द नंबर ऑफ मशीन्स we refers to the number of sources, basically to the number of services service facilities, service facilities through which a job must pass before it is assumed to be completed. Assumed to be completed. Okay, so this is the number of machines. How many machine we use here? So suppose we can take the example of one machine we take for the printing.
When our printing is done, then we go for the binding. Okay, so first machine जब तक अपना काम complete नहीं कर देगी तो we do not transfer the task to the second machine. Now, the second term we have the processing time. Processing time. This is also an important term, processing time. So this is the time required by a job on each machine. किसी भी जॉब और टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है किसी पर्टिकुलर मशीन द्वारा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम. नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑर्डर. सो दिस refers to the order or sequence in which machines are required for completing the job. मीन्स फर्स्ट वी फॉलो द ऑर्डर और सीक्वेंस में जैसे पहला प्रिंटिंग हो गई, सेकंड बाइंडिंग हो गई, तो ऐसा नहीं पहले बाइंडिंग होगी फिर प्रिंटिंग होगी, तो पहले प्रिंटिंग होगी देन वी बाइंडिंग. तो वी मेक द सीक्वेंस और वी मेक द ऑर्डर विच वर्क start first then required for the completing the job. Now next is ideal time. Ideal time on a machine. So basically ideal time write down on a machine. On a machine. So this is the time during which machine does not have a job to process. ओके. आइडियल टाइम मतलब जैसे सपोज हम मशीन ए की बात कर रहे हैं, मशीन बी की बात कर रहे हैं. अब मशीन बी में दोनों मशीन एक साथ हमने स्टार्ट कर रखी है. आइडियल टाइम क्या होगा कि जैसे मशीन जब तक ए अपना टास्क परफॉर्म कंप्लीट नहीं कर देती, सपोज उसने टास्क परफॉर्म जीरो से स्टार्ट हुई, उसने अपना जॉब वन का टास्क परफॉर्म करने में 4 आवर्स लगाए, तो तभी ये जो टास्क होगा कंप्लीट होने के बाद वो ट्रांसफर होगा मशीन बी पे. तो मशीन बी कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मशीन बी का जो आइडियल टाइम होगा तो उसने 4 घंटे वेट किया उस टास्क के लिए. So that is called the ideal time. Ideal time by the machine B. Okay. So hope you understand. Now next is total elapsed time. Total elapsed time. So total elapsed time. So this is the time interval. This is the time interval between starting the first job. फर्स्ट जॉब कब से स्टार्ट हुआ और कब कंप्लीट हुआ, एंड completing the last job. Completing the last job, including the ideal time.
in a particular order by the given set of machines. So these are basic terminology we have to remember or understand before doing sequencing. Okay, so processing time, number of machines, processing time, processing order, ideal time, total elapsed time. Okay, so now we write down one. If n jobs are to be performed one at a time on each of m machines, so the possible then the possible sequence will be factorial n raised to the power m. So possible sequence factorial n raised to the power m. So you have to remember this thing. Total number of possible sequence. So we can take a particular case. So for taking the particular case, if we have three jobs and we have three machines, n equal to three jobs and m equal to three machines. So then the total number of possible sequence, the total number of possible sequence will be factorial 3 raised to the power 3. So factorial 3 raised to the power 3. The factorial 3 is 6. 6 raised to the power 3. So 6 6 is 36. 36 6 is 216. So 216. So these are the possible sequences. 216. Okay. So now we understand these basic terminologies. So we'll move to the mathematical procedure for writing the machine. So mathematically, we write down that let M1, M2, Mn are machines and let there are n jobs. Which can be represented as 1, 2, 3, and n jobs. So then we represent as, so first we write down the jobs. Jobs we write down in this way: 1, 2, 3, 4, 5, and n. So we have n jobs, and machine we write down in this way. So machine A1, A1 machine. So the time of machine A1 is given as in this form. Suppose we are considering as AI. So AI machine means A1, A2, A3, and so on. Second is machine BI. So we write down as B1, B2, B3, and similarly we write down the machine CI, DI, or CM. Okay, so we take the M machines.
Now we start the first topic. We consider two machines and a job. So when two machines and n jobs, ओके, दो मशीन है हमारे पास और n जॉब है सॉल्व करने के लिए, तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी विल सॉल्व हियर. वी स्टार्ट द फर्स्ट थिंग, two machines and jobs. So we consider let A and B be two machines and there are n jobs. So then we write down jobs. Jobs we write down in this way: one, two, three, four, n jobs, and we represent the machine into this side. So machine A, which having A1, A2, A3, A4, AN, B1, B2, B3, B4, and Bn. So now how to solve such type of problems? So for doing the solution of such type of problems, first we make a train. तो फर्स्ट, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वी मेक ए ट्रेन ऑफ एन बॉक्सेस. जितने नंबर ऑफ जॉब होंगे उतने ही हमें बॉक्सेस बनाने होंगे. सो नाउ वी मेक द एन बॉक्सेस. So that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on, n boxes. So we make the n boxes. So now we do the procedure for making the sequencing of jobs. So now we write down, so we select these are the times. So these are the times were taken by the machine. So now we select the minimum time from the given table. So here we select the minimum time. और minimum time वो A का भी हो सकता है और B का भी हो सकता है. So this we can represented by AI. This we can represented by BI. So AI and BI. So now we see that if the minimum time, if the minimum time in AI, अगर मशीन A में मिनिमम टाइम आ रहा है, so then we start to do the job in the first box. So we start, that means this is our train. अगर मिनिमम जो टाइम है वो ये मशीन में आ रहा है, एआई मशीन में, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? फर्स्ट बॉक्स से. तो नम जॉब्स देना. तो वी स्टार्ट द विद फर्स्ट बॉक्स. और इफ द मिनिमम टाइम इन बीआई, अगर बीआई मशीन में मिनिमम टाइम आ रहा है, सो देन
we do the job at last box। तो उस केस में हमें क्या करना है, जॉब स्टार्ट करनी है आपको लास्ट बॉक्स से। तो दैट मीन दिस इज अवर ट्रेन एंड सो ऑन, और दिस इज अवर लास्ट बॉक्स, सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स अगर मशीन बी में हमारा मिनिमम टाइम आ रहा है। ओके, सो वी प्रोसेस दिस अगेन एंड अगेन। We process this again and again till all jobs are assigned or completed। Now we have one more thing is remaining. That thing is if we have the repetition, so that means minimum time occur on both machines. Minimum time occur on both machines. So we, that means repetition. So then we make the another boxes on the basis of that। Okay, तो रिपीटेशन के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिपीटेशन अगर टाइम का हो रहा है, दोनों मशीन में सेम टाइम रिपीट हो रहा है, तो सेम प्रोसीजर वही रहेगा, बट वी मेक टू केसेस, टू डिफरेंट केसेस। जैसे ये ट्रेन है हमारी, अब इस ट्रेन में हम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हमने, सपोज करो फर्स्ट से स्टार्ट किया, यहाँ वन जॉब आ गया या फोर्थ आ गया, बट हमें थर्ड पे दोनों तरफ हमारा जो मिनिमम टाइम आ रहा है सेम पा रहा है, या तो हम यहाँ लिख पाएंगे पहले थ्री, और ये उसके बाद यहाँ लिख पाएंगे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि टेबल में दोनों जॉब सेम हो जाएंगे। तो वी मेक टू केसेस इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वी मेक टू केसेस हियर। तो वी डू नॉट राइट इन दिस, तो वी राइट इन दिस वे। So first we write that here is one, next is four, here is three, or now here is one, or here is four, and now is three. So we move to the further if required. So we do that. Okay. So मतलब दो हमारे पास टोटल ट्रेन आ जाएंगी, और फिर उसे अगर आगे फिर भी रिपीट हो रहा है तो फिर वी कैन मेक अगेन ए चेंज। ओके, और उनमें से फिर हम ये हमारे पास चॉइस रहेगी कि किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को हम लेके, दैट मीन्स ट्रेन सीक्वेंस को लेके वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें कैसा दोनों से ही सॉल्व करना, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड द concept of two machines and n jobs by taking one example।